Hello everyone, this is me Smriti and you're watching me on Imaginators. Here I'm introducing the new lesson, that is the mechanism of photophysical process and Jablonski diagram. So first I want to tell you what are the types of photophysical process. Basically photophysical process can be occur by the photosensitized substance. These substance can be the different types, like suppose first I want to tell you the photophysical process can be two types, fluorescence and the phosphorescence. Fluorescence is what? A substance, a specific type of substance, like suppose you have calcium fluoride, uranium, petroleum, organic dye, eosin, chlorophyll, quinine. These type of substance absorb a fixed amount of wavelength from the source. Once it will absorb the fixed amount of wavelength, it will immediately go to the higher excited state. At the very minimum time, at very less time, 10 to the power minus 8 second, it will re-emit it in the form of heat. As soon as the incident light is cut off, this process can immediately become a stop. Therefore, fluorescence it's always depend on the source of the light. It dependent on the light presence. If the light is not there, if the incident light is not there, this process cannot occur for the long time. So therefore we can say it is a short duration process, right? Now come to the next process, that is called phosphorescence. Maybe that sounds same, but it is also called delayed fluorescence. Means it is some form of fluorescence, but why we are using delayed fluorescence? Means this process will be exactly same like this, but the timing you can say, first we'll explain the definition. The re-emission of radiation continues for some time even after the incident light is cut off. मीन्स लाइट के कट ऑफ होने के बावजूद भी ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होती रहती है. मतलब लाइट का इंसिडेंट सोर्स का इम्पोर्टेंस है. एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, लाइक ये सब्सटेंस जो होते हैं जनरली अल्कलाइन अर्थ मेटल के ही सल्फाइड्स होते हैं. यू कैन सी हियर जिंक सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड, स्ट्रॉन्शियम सल्फाइड. These are substances always shown the phosphorescence process. Why? Because they absorb fixed amount of the lambda and will goes to the higher excited state. But by cutting off the incident light, it will give you the heat energy for the long time. Means it is not completely dependent on that source की light continuously आ रही है कि नहीं आ रही है. So this is the fluorescence and the phosphorescence. Now come to the Jablonski diagram. What is the Jablonski diagram? The diagram which illustrates the electronic state of the molecule and the transition between them. In the two diagram, here you can say I have drawn the two diagram or two different electronic state. Some are arranged in a vertical form and some lines are arranged in a vertical form and some are arranged in a horizontal form. Now first I want to tell you what are they indicate. So first, what is this? This vertical line indicate the energy states, but this horizontal lines indicate the spin multiplicity. And this line, you can say this is a zigzag line. This zigzag line indicate the non-radiative type of transition. Here you can see this non-radiative transition, but this solid line indicate the radiative transition. Remember, non-radiative transition is a result of heat energy. Means whenever the energy will loss in the form of heat, we will represent by this you can say zigzag line. Whenever the light, whenever the heat, whenever the energy emit in the form of light, we will represent by this solid line. So this you can say, here I have drawn, this is the vibrational ground energy state. But under these two ground energy state, there are so many vibrational excited state. Okay, so this is the singlet state of the molecule, and this is the triplet state of the molecule. Between singlet and triplet state, there are so many processes involved, like vibrational relaxation and internal conversion, then fluorescence,
system crossing, this is intersystem crossing, delayed fluorescence, and then phosphorescence. So I will explain one by one. See here, you can say first you should know the spin multiplicity. What is the spin multiplicity? Here you can see very well what is the spin multiplicity. See, spin multiplicity is always represented by the formula, that is 2s plus 1. See, that is 2s plus 1. So s is what? S is the total spin. So suppose if you have this ground singlet state, you have a 2 electron. So this electron can absorb energy. If it will absorb energy, it can go to the, it will goes to the higher excited state by maintaining the parallel spin or by maybe in opposite spin. मतलब there are two ways. ये या तो जो ग्राउंड स्टेट का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या तो ये अभी जिस स्टेट पे है, मतलब अभी किस स्टेट पे है, द ऑपोजिट स्पिन एक दूसरे के साथ है, अगर ये जाता है तो ये अपने स्पिन को क्लॉकवाइज ही रखेगा जैसे ग्राउंड स्टेट में, मतलब स्पिन का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हुआ. सो दैट स्टेट इज कॉल्ड ट्रिपलेट स्टेट. और दूसरा तरीका ये हो सकता था इस इलेक्ट्रॉन के जाने का कि यदि स्पिन ऑपोजिट हो जाए हायर एक्साइटेड स्टेट में, तब उस टाइम पे जो स्पिन की मल्टीप्लिसिटी मिलेगी वो हमें 0 मिलेगी. तो उसके कारण जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यू विल गेट द 1, दैट इज कॉल्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट. सो हियर आई हैव already explained the total spin because the spins are plus 1 plus half, so ultimately 1. So we will put the value here, 2s plus 1, 2s plus 1. So here is s is what? S is 1. So 2 into 1 plus 1 equal to 3. So we'll call this is the triplet excited state. Here you can say this is the total spin. Plus half minus half equal to 0. So 2 into 0 plus 1 equal to 1. That is called triplet excited state. That is called singlet excited state. Now come to the next point. Now अब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट के साथ साथ भी बहुत सारी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट भी हो सकती हैं. हियर यू कैन सी वेरी वेल. सपोज आई हैव दिस सिस्टम. This system consists of vertical line and so many horizontal line. एक ही एटम में सिंगलेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट हो सकती है. सो सिंगलेट से ट्रिपलेट का जो सफ़र होता है वो इतना आसान भी नहीं होता है. पर पहले मैं आपको बता दूं, सिंगलेट और ट्रिपलेट में अगर हम कंपेयर किया जाए तो सिंगलेट स्टेट हमेशा ट्रिपलेट से समहाउ एनर्जी में आप देख सकते हैं कि एक दूसरे की करस्पॉन्डिंग स्टेट है. ये एक दूसरे की करस्पॉन्डिंग स्टेट है जिसमें सिंगलेट जो होती है कंपैरेटिवली हायर एनर्जी की होती है एज कम्पेयर टू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट. सो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके अपनी सिंगलेट 1, सिंगलेट 2, सिंगलेट 3 ऐसे पॉसिबल एनर्जी स्टेट में जा सकता है. सिमिलरली ट्रिपलेट पर आप देख रहे होंगे कि जो ग्राउंड स्टेट की स्पिन है वो एक्साइटेड स्टेट में ऑपोजिट ही है, चाहे वो फर्स्ट सिंगलेट में जाए या सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड में जाए या ट्रिपलेट सिंगलेट मीन्स थर्ड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट पे जाए. बट स्पिन शुड बी ऑपोजिट. In case of the corresponding triplet state, the spin should be parallel or you can say same as like ground state, right? So जब हम एनर्जी लेवल्स पढ़ते हैं या इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल या एब्जॉर्प्शन के बाद जो एक्साइटेशन एनर्जी होता है वो हमेशा सिंगलेट की जो एनर्जी होती है इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रिपलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन triplet first excited state. Then triplet first excited state is always greater than singlet second excited state. Then singlet second excited state is always greater than triplet second excited state. So इस तरीके से हम ऑर्डर बढ़ते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि एक ग्राउंड स्टेट से एक ग्राउंड सिंगलेट स्टेट से एक
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ सिंगलेट के बीच में बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हो सकते हैं। तो इस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को हम V0, V1, V2, V3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे क्या है, ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। अब हम इन सबको हम कंक्लूड करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक में, लाइक दिस। सपोज आई हैव दिस diagram that is actually called Zablonsky diagram. Okay, so by seeing this diagram you can understand very well. So suppose I have this two system, one is the singlet system, here you can say, another is the triplet system. So what is this system? Here you can say there are so many processes are going on, right? So पहले तो मैं आपको बता दूं, मान लो ये सिंगलेट है और एक उसी मॉलिक्यूल की ट्रिपलेट स्टेट है। तो मान लो सपोज कोई आपके पास फोटोसेंसिटाइज सब्सटेंस है, उस फोटोसेंसिटाइज सब्सटेंस ने हीट या एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्व किया। सो जैसे ही वो एब्जॉर्व करता है 10⁻⁻15 सेकेंड में लाइट को एब्जॉर्व करके वो सीधे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट ऑफ सिंगलेट में जाता है, मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ सिंगलेट में जाता है। जैसे ही हीट लाइट को एब्जॉर्व करता है तो वो सीधे डायरेक्ट हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है। पर इन सिंगलेट के बीच में भी बहुत सारे क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। तो मान लो इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के लिए वहाँ पे अगर रहता भी है तो कुछ समय बाद वो अपनी एनर्जी को कितने फॉर्म में एमिट कर सकता है। जैब्लॉन्स्की डायग्राम ये आपको बताता है कि कितने फॉर्म में कर सकता है और कितने प्रकार के प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन जब अपने वाइब्रेशनल एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है, जिसको मैंने इस वेवी लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ये आपको बताता है कि इसी सिस्टम के अंदर इंटरनल कन्वर्जन हो रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं, ये जो वेवी लाइन है ये क्या बताती है, ये वेवी लाइन आपको नॉन रेडिएटिव फॉर्मेशन बताती है। सो नॉन रेडिएटिव का मतलब क्या है कि पक्का जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, ये दो जो हैं जिनको मैंने सॉलिड लाइन से ब्लैक से बताया, ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, इनके बीच में कई वाइब्रेशनल लेवल हैं। ये वाइब्रेशनल लेवल में इंटरनल कन्वर्जन हो रहा है, ये हमेशा हायर एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट सिंगलेट स्टेट पे के बीच में होता है। और ध्यान रहे, इसके लिए जो टाइमिंग रिक्वायर होती है वो 10⁻⁻8 होती है। मीन्स 10 टू द पावर सॉरी मीन्स इसके लिए यहाँ पे जो टाइम स्केल इन्वॉल्व होती है, ये प्रोबेबली इसकी टाइम स्केल जो होती है ये 10⁻14 टू 10⁻- बिटवीन 10⁻14 टू -8 हो सकती है। यहाँ से इनके बीच में आप यहाँ लिखा हुआ है मैंने, 10⁻14 से 10⁻11 के बीच में इनका इंटरनल कन्वर्जन हो सकता है। नाउ सपोज आपका इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ से यहाँ पे गया, फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। ये भी हो सकता था कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं हो, और जब वो यहाँ से नॉन रेडिएटिव ट्रांसफर करेगा तो मे बी वो अब ज़्यादा दूर नहीं, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नहीं, बल्कि अपने वाइब्रेशनल एनर्जी पे ही लाए करे। तो इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। What is the vibrational relaxation? It is also the non-radiative type of relaxation. When the energy is dissipated by the electron to the other vibrational mode, like मान लो एनर्जी डिसिपेट हो रही है, not by the emission of heat or light energy, or you can say any other mode, means mode can be the kinetic energy also. So when the energy dissipated by the electron to the other vibrational mode as the kinetic energy, that is called vibrational relaxation. It is also the non-radiative type of relaxation. Therefore, I have represented by this wavy line. Now come to the next point. Suppose this is the vibrational state. Okay, now it may be possible electron can directly go to the ground state, that is called fluorescence.
So what do you understand by the fluorescence? Here I have represented by the solid line. Means this is what? Radiative type of transition. Radiative type of transition means it may be give you the heat or light energy. So how much time it will require? It will require, what will be the time scale? This time scale will be 10 to the power minus 8. So fluorescence is a radiative type of process. It's less likely at higher energy excited. It's more likely at the first excited state. Okay. So remember, ये हायर एक्साइटेड स्टेट की जगह तो नहीं होती, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से बिलोंग करती है. मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड पे पहुंचता है तो उसको हम फ्लोरोसेंस बोलते हैं. और इसके लिए जो टाइम स्केल होती है वो 10 टू द पावर -8 होती है. अगर ये दो नॉन रेडिएटिव टाइप ऑफ, एक है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, इंटरनल कन्वर्जन, फ्लोरोसेंस. सो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन अपने सिंगलेट स्टेट से, सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से क्रॉस करके अपने ही सिस्टम में ट्रिपलेट स्टेट पे जाए. ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. सो ऐसे टाइप के ट्रांजिशन को, जिसमें इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगलेट से दूसरे ट्रिपलेट स्टेट पे जाता है, दैट इज कॉल्ड inter-system crossing. It is also one of the non-radiative type of process. So it is also, you can say, it is also the non-radiative mode of energy dissipation. So what we are studying, actually we are here by this diagram, I am explaining the mode of energy dissipation. So what is the inter-system crossing? Inter-system crossing, when the electron changes spin multiplicity from the singlet excited state to triplet excited state. Remember what I said? When electron changes spin multiplicity from singlet excited state to a triplet excited state, this is called inter-system crossing. It is the slowest process. Not only the slowest process, it is the forbidden also. It can, or you can say it can, this process can compete with fluorescence, because fluorescence require how much time? 10 to the power -5, and this require 10 to the power -8 to this fluorescence required 10 to the power -8, but this require 10 to the power -8 to 10 to the power -3. This is called inter-system crossing. Always remember, it is non-radiative process, therefore I am depicting here by the wavy line. Now your electron is already come here. Okay, now what happened? Again this electron can dissipate its energy in the form of non-radiative. So we can say that is called vibrational relaxation. It is also non-radiative when energy is dissipated by the electron to other vibrational mode as kinetic energy. Also the time required 10 to the power -14 to 10 to the power -11 second. That's it called vibrational relaxation. Okay. Now the next, now your already electron is lie here, that is a triplet ground state. The last process is called phosphorescence. Phosphorescence here I have represented by the solid line. Phosphorescence, it is the radiative type of energy dissipation. Radiative type of transition, when the electron radiate from the first triplet excited level to singlet ground state. This require lot of time, therefore this is very slow process, and it is also forbidden process. How much time required from here to here? It required 10 to the power -4 to 10 to the power -1 second.
And also remember, for this process we require not only the time, it will require also the high temperature. So therefore phosphorescence require high temperature. So friends, here I have already explained the Jablonski diagram. Here you understand the mode of energy dissipation. There are many types of mode of energy dissipation. One is the vibrational relaxation, non-radiative, intersystem intersystem conversion, you can say non-radiative type of, again non-radiative type of energy dissipation. It occurred due to the overlapping, see here you can say the or and a vibrational state are overlapped with each other. So this process occurred due to the overlapping of vibrational energy level of electronic state with other electronic state, here you can say. So this is called IC or internal conversion, or you can say this is the first this is the internal conversion, and also non-radiative process. And next is the fluorescence, represented by the solid line, means it is the radiative process. It is less likely at higher energy state. It is more likely at the first excited state. It required 10 to the power minus 8 time, 10 to the power minus 8 second. And next is intersystem crossing. It is the non-radiative type of energy dissipation when electron changes spin multiplicity from the singlet excited state to an triplet excited state. That is called intersystem crossing. It is slowest process, also it is forbidden process. This process can compete with this fluorescence because the time scale for this intersystem crossing, here I have already mentioned 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 3. So it can compete also this fluorescence. And the phosphorescence, it is the slowest process. When radiation, when electron is excited, when electron will energy dissipated from triplet to singlet ground state, it is very low also, very slow also, forbidden, and it required the high temperature, as well as the time scale will be 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 1 second. So in the Jablonski diagram, these are the type of process or energy dissipation modes, and this is the time scale for this, as well as radiative type of transition. What are the radiative and what are the non-radiative, here you can understand. So this is all about the Jablonski diagram and photophysical process. Definitely so many questions asked in CSIR NET exam. So those students who are preparing CSIR NET, JEM, GATE IIT exam, they should know the Jablonski diagram thoroughly.